Till which topic? We had actually just started with hot filtration. उसका लिखा हुआ नहीं है. अच्छा, लिखा हुआ नहीं है. नहीं नहीं. So hot filtration का मतलब क्या होता है? See, basically in hot filtration, the solution, when we are preparing a saturated solution, we are heating it, right? So this Right. solution is filtered when it is hot. Okay. And this filtration which is done, that is done under suction, right? And why Right. this suction is done? This suction is done because it allows rapid filtration. If we want to make filtration process fast, okay, so that is rapid filtration. Finally, whatever the impurities which are undissolved, they get removed in the form of residue. Okay. So this is about hot filtration written. Uh, yes. Yes. Now next one is cooling of the filtrate. Now what is cooling of the filtrate? See, basically when we are seeing the filtrate which is hot, now it is removed and then it is allowed to cool. So most important thing is that the solubility of a substance decreases with lowering of temperature. Now, can you tell me the contraindication that we studied in solution with relation to decrease in temperature for neat? Yes. Yeah, What sir. we studied in solution when there is decrease of temperature. Solubility of a substance increases with uh, increase of temperature. Yes. So, and no. Solubility of a substance increases with decreased temperature. Hmm? Okay. What we studied. This. Hmm?
But here what it is saying? Here it is saying that the solubility of a substance decreases. So what happens? The filtrate becomes super saturated. Why it is super saturated? Because here you can find large number of solute particles. Large number of solute particles gets dissolved in this. So therefore, the excess quantity of the dissolved solute comes out of the solution and it forms crystals. So how are crystals formed? Crystals are formed because of the supersaturated solution. Okay. So therefore we see that the dissolved impurities, they do not supersaturate the solution. Why? Because the dissolved impurities are very less, and these dissolved impurities, they continue to remain in the solution, but they are all present in dissolved state. Okay, so the impurities are present in dissolved state, and finally we see that the pure filtrate is obtained. Getting? Yes, teacher. I got it. Uh, yeah. So the separated crystals are free from any impurity. Now next is filtration. Filtration, as I told you above, key the crystals of the pure substances, whatever it is there, they are all separated out by filtration. So the filtrate obtained is called the mother liquor. Mother liquor means it is the pure. So the filtrate is free from all the impurities. Now, what solvent we have to choose, that would rather define the crystallization. Okay, so the solvent which we can use is the first property that we have to see is it should be sparingly soluble. It should be sparingly soluble in the solvent at room temperature, but it is highly soluble at high temperature. Okay. And second thing is that the solvent actually should not react. It should not react chemically with that compound with which it has to be purified. Okay. So no reaction should be there. And next, it should be volatile. Okay. Now, here, what we can take is, we have to take crystallization, how we can do a common salt. So basically, what we will do, we will keep this funnel, we will keep the filter paper, and this funnel will be kept on a beaker. Okay, and here we are adding the hot saturated solution. Okay, and continuously
filter this hot saturated solution. So insoluble impurities will be there na, it will be left over on the filter paper, and then we will collect the filtrate, and then we will cool it, and finally we will get the crystals of the substance. Okay, so therefore with this is the best process wherein impure copper sulfate that can be purified by crystallization, and in this case water is used as a solvent. See, water is actually a universal solvent. Next we see is benzoic acid, and this benzoic acid also can be purified the same way. Okay, now next very important is fractional crystallization. How we are going to do fractional crystallization? See, fractional crystallization, it is usually done in the case where two or more substance in a mixture which is present in a mixture, so which are present together. Now this mixture here, it can be separated by you can say first of all we have to dissolve this mixture in a hot solvent. Hot solvent dissolution we need to do, and then the saturated solution is then filtered, so when we take both of them, then a saturated solution is obtained. Now this saturated solution further goes and it is filtered, and then we remove all the dust particles. Okay, so once all the dust particles are removed, it is allowed to cool. So what happens on cooling? On cooling, the solute which is less soluble, it crystallizes out first. Okay, the one which are less soluble, and then the crystals are then filtered. It is washed with the solvent and dried. So whatever the mother liquor we are getting, that mother liquor is actually concentrated by evaporating the solvent. Okay, and then the second solute crystallizes. The second solute undergoes crystallization. From where? From the mother liquor. And then they are filtered and separated, and purified second component is obtained. So fractions, the name suggests fraction. Fractions means what? Fractions means when we are separating it out in the form of crystals. Two mixtures which are separated. Okay, now next we will see is distillation. And simultaneously you have to draw the diagram also. Okay, so what is distillation? See, distillation is actually a very important method which is used to separate two things. First of all, you can say the volatile liquids from non-volatile impurities.
volatile liquid from non-volatile impurities, and second, those liquids which have sufficient differences in their boiling point. For them, we are using fractional distillation. Okay. Now, how we are going to do distillation? It is very simple. See, first of all, what we will do in a round bottom flask, we put the liquid. Okay. Now this liquid it is fitted up with a cork, and then we pass a condenser through it. Or you can, there's a hole now. From here, there's an opening. So what happens is, this liquid, when it is heated, the vapors which are formed, now these vapors, they pass off in this. Okay. Now here inside this tube and outside this, cool water is flowing, cold water. So what happens, as soon as these vapors go and strike over here, they get converted into liquid, and then distilled liquid is obtained. This is called as distillation. Distillation is pure. So pure liquid. Now neat question is there, in pure water, electrolysis can take place? No. Okay. Got it? Okay. Yes. Are you understanding me? Huh. Now, here we have a liquid, here we have activity. You can check out the activity now. How can you separate? Now it is important for us also, because in NEET also, they can ask many times that how will you separate the mixture of acetone and water? Yes? Right. Right. Huh? Yes, ma'am. Mhm. Yes. Uh, how will you separate the mixture of acetone and water? Through distillation only. Huh? Sir, what exactly is the question? Question is, if you have a mixture of acetone and water, how are you going to separate it? Through the distillation process only, right? Distillation process. So we need to say that actually the acetone and water, they are what? They are two most important mixture. Now they are miscible. Acetone is mixed in water. But they have a difference in their boiling point. Acetone dissolves at 56 degrees centigrade, but water has a dissolution of 100 degree centigrade. Okay. So therefore, we see that as when the mixture of acetone and water is heated and the temperature reaches to 56 degrees centigrade, then the vapors of acetone will start distilling off. And when all the acetone distills out, then again, when the temperature rises, then water is distilled. So two miscible liquids, but both of them are having different boiling points.
Now we'll see next what is fractional distillation. See, fractional distillation means what? In fractional distillation, if in a mixture the difference is of two liquid is not that much. Okay, so simple by fractional distillation you cannot remove. So if you have to separate such liquids, then the process called fractional distillation is employed. So in this assembly, the distillation flask we take, in this distillation flask, there is entire fractionating column. Do you have your book? Should I share it on the, you Oh, no, have I it have now? I have. So you see the entire fractionating column is there, which consists of the beads and all. So basically what happens is when the vapors rise more than the when actually vapors of more volatile liquid. Now, volatile liquid means what? That liquid will have a lower boiling point. Okay. Oh, Okay. So, that liquid will have more boiling point. So, what will happen? That in this case, the liquid will rise up. Okay, so when the liquid rises up, then it will pass through this fractionating column, and then it gets condensed over here. Okay, it gets condensed over here. So therefore, what will happen? While passing through the fractionating column, there is an exchange. एक तो क्या है कि लिक्विड है वो नीचे इसके अंदर में वेपर्स राइज हो रहे हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है, लिक्विड है वो बन रहा है. सो व्हाट विल हैपन इज कि द लिक्विड एंड वेपर्स दे बोथ स्क्रब ऑफ, एंड सिंस दे स्क्रब ऑफ, देयरफॉर जो ए वाला है वो ज्यादा रिच हो जाता है. ओके, एंड ये प्रोसेस है कंटिन्यूअसली टच करता रहता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को. तो जो वेपर्स हैं वो ए मिक्सचर ए सब्सटेंस में रिच हो जाते हैं. हमने दो सब्सटेंस लिया है, ए या बी, तो ए ज्यादा वॉलेटाइल है, बी कम वॉलेटाइल है. तो जब ए हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ए राइज अप होगा, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा बी भी राइज अप होगा. क्यों? क्योंकि ए और बी इन दोनों के अंदर में कम वेपर होते हैं. आर यू गेटिंग? सो ये प्रोसेस है, बहुत बार रिपीट होता है, एंड फाइनली ये कंपोनेंट है. फिर हम सेपरेट करते हैं इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली रिपीट करके. अब जैसे अगर मैंने लिया एसीटोन और मैंने लिया मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल है, तो एसीटोन होगा 329, मिथाइल होगा 337. देखो कितना कम है. इवन एसीटोन एंड बेंजीन, they can be separated by fractional distillation. See, basically हमको क्या पता है कि fractional distillation के अंदर में we will be using that liquid only which have very similar boiling point. okay. Are you getting? एक बार go through करना है बुक में. हाँ, yes, yes. एक एक बार हाँ go through कर लो.
Mm. Neil, I'm coming in 2 minutes. Huh? Okay. Done? Yeah, teacher, done. Yeah. Okay. Now, next is absorption chromatography.
Now, in what conditions are we using chromatography? अब ये भी क्वेश्चन है, ये पूछते हैं नीट के अंदर में. भाई chromatography is actually based on principle of differential adsorption. Now, what is differential adsorption? देखो दो चीज होती है, एक होता है एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है एडसॉर्प्शन. एब्जॉर्ब मतलब पूरा एंटर, फुल एब्जॉर्ब, full taken in, but adsorb means on the surface. Okay, so different solutes, they are absorbed to different extent. Okay, when they are on stationary phase. See, basically एक क्रोमेटोग्राफी होती है जिसको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं. बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर separation of components. Okay, it is used for separation of components over a column of stationary phase. Stationary phase मतलब खड़े रहना. ना stationary phase वो रहता है, in stationary phase what we are using, we can use alumina beads और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलिका जेल. सिलिका जेल आजकल बहुत चल रहा है. इवन यू नो आप न्यू न्यू जो बॉटल्स खरीदते हैं या कोई भी न्यू वेसल लेते हैं, पैक्ड वेसल या बॉटल्स, तो उसके अंदर में आप देखते हो ना छोटा सा व्हाइट कलर का निकलता है, टिफिन बॉक्सेस ये. सो इट कंटेन सिलिका जेल विच एब्सॉर्ब्स द मॉइस्चर. सो सिलिका जेल इट इज अ वेरी गुड एब्सॉर्बेंट. सो हम क्या करते हैं, इसका एक स्लरी बना लेते हैं. स्लरी मतलब लिक्विड, सेमी सॉलिड. ओके, और इसको ना हम एक बहुत बड़े ट्यूब के अंदर में पोर इन कर देते हैं, डाल देते हैं. और इसके नीचे स्टॉप कॉक होता है. तो क्या है, जैसे हमने ये एक स्लरी लिया और ये यहाँ पे पूरा डाल दिया. कैन सी योर बुक ऑल्सो. और उसके बाद में व्हाट वी आर डूइंग इज, इसके ऊपर में वी हैव ग्लास, एक ग्लास वूल का प्लग होता है जो हम नीचे रख देते हैं ताकि कुछ नीचे निकले नहीं. अब वॉट एवर मिक्सचर विच वी हैव टू टेक विच नीड्स टू बी सेपरेटेड, वी डिजोल्व इट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, और फिर हम उसको क्या करते हैं, यहाँ टॉप में लोड कर देते हैं. जो मिक्सचर को हमको सेपरेट करना होता है उसको हम we load it on this silica gel absorbent column. So you can say एक मोबाइल फेज बनता है जिसके अंदर सिंगल सॉल्वेंट और एक मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट जो हम एब्सॉर्बेंट कॉलम के ऊपर में डालते हैं. तो क्या होता है, ये ऊपर नीचे ये फेज है वो चलता है. तो नीचे क्या है, नीचे हमारा स्टेशनरी फेज है. ठीक है, इसके ऊपर में हमने क्या डाला है, हमारा सॉल्वेंट है जो हमको सेपरेट करना है. सो द सॉल्यूट है वो एब्सॉर्ब हो जाता है ऑन द स्टेशनरी फेज. और किस किस डिग्री पे वो एब्सॉर्ब होता है वो हम देख सकते हैं कि वो एक दूसरे से कैसे सेपरेटेड आउट हो रहा है. तो जो बहुत स्ट्रांगली एब्सॉर्बेंट कंपोनेंट है ना, वो कॉलम में रह जाता है. और दूसरा क्या है, अलग अलग डिस्टेंस पे एब्सॉर्बेंट कॉलम पे वो मूव कर जाते हैं. सो जो सबसे ज्यादा एब्सॉर्बेंट कंपोनेंट है वो इट रिमेन्स. गॉट इट. सो इस तरीके से वी आर हैविंग फर्स्ट adsorbent,
उसके ऊपर में सॉल्वेंट, और बीच में हमारा एक फेज आ जाता है, ये ले लो, जिसको हम बोलेंगे मिक्स, मिक्स ऑफ सॉल्वेंट एंड एब्सॉर्बेंट। और उसके अंदर में जो अलग अलग कंपोनेंट्स है ना, फिर वो ग्रेजुअली अलग अलग कलर से आप सिग्निफाई कर सकते हो, जैसे नीचे आते हुए एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। सो इस तरीके से अलग अलग लिक्विड्स हैं, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो जो कंपोनेंट है विच इज लेस स्ट्रांगली एड्सॉर्ब, उसको हम सबसे पहले बोलेंगे। ओके, एंड इट लीव्स द कॉलम फर्स्ट। और जो स्ट्रांगली एड्सॉर्ब्ड कंपोनेंट है उसको हम बाद में बोलेंगे। यू गॉट? तो बेसिकली ए बी सी, ये तीन तरीके के कंपोनेंट्स हैं, ये तीनों सेपरेट हो जाते हैं। और आप इवेपोरेट करोगे ना सॉल्वेंट को, तो सारे सॉल्यूट है वापस से आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ओके, सो दिस इज एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, कि वो उसमें एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वो इस एडसॉर्बेंट सरफेस पे रिटेन्ड है। गेटिंग? एक बार रीड करो इसका, इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज। और कोई डाउट हो तो मुझे पूछो। Okay.
Yeah, teacher, done. Okay. Now next is, okay, can you tell me, can you describe me this chromatography? Because this is pretty tricky. Yes, yes. I'll explain. Yeah. First of all, this blue part is supposed to be the uh, Tell me. uh, the yellow part is supposed to be the stationary liquid which is already present in the test tube. फिर उसके बाद the blue part is supposed to be uh, जो अभी अभी डाला है the दूसरा वाला component which has been added to the test tube just now, and green part is supposed to be uh, the layer where the mixing of the two substances is taking place. Hmm. Okay. So how will it uh no, give me some more detail. Basically, the yellow part is present in a stationary phase, which means that so the separation of components is already going on. The filtrate is going to settle at the bottom of the test tube. Hmm. Yes. Then Because of the second substance which has been added, the blue substance, there is a incontinuity, and the and the नहीं नहीं रुको and the due to the blue substance there is an incontinuity, and therefore the settling of the filtrate at the bottom is not able to take place as the reaction is going on between the yellow liquid which is in stationary phase and the blue liquid which has just been added. And because of this reaction, a green phase is formed, which is shown over here, which is basically the uh, meeting of the two different substances. हाँ नहीं hmm. हाँ टीचर उसके बाद नहीं. Okay. नाउ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो एक चीज याद रखना, इसके अंदर में स्टेशनरी फेज है ना, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, Okay. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी क्या होता है कि इसके अंदर में वी आर टेकिंग वी आर टेकिंग अ ग्लास प्लेट। ठीक है। इस ग्लास प्लेट के ऊपर में हम ना एडसॉर्बेंट लेयर है सिलिका जेल की, उसकी ना एक थिक लेयर बना देते हैं, ग्लास प्लेट। नाउ इस प्लेट, दिस इज एक्चुअली अ क्रोम प्लेट, इसलिए इसका नाम है क्रोमेटोग्राफी।
क्रोम मतलब एक्चुअली होता है कलर। ओके, सो या ओके। हम इसको बोलेंगे टीएलसी, मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या क्रोम प्लेट। अब इसके ऊपर में हम जो मिक्सचर है सॉल्यूट का वो अप्लाई कर देते हैं। सब मिक्स कर दिया, इसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर में हम 6-7 तरीके की यू कैन यूज द इंक, आप वो भी यूज कर सकते हो। तो दैट इज नथिंग बट अ सॉल्यूट। So the mixture of solute is applied on the chrome plate as a very small spot, और U है एक जनरली 2 सेंटीमीटर का छोटा स्पॉट है वो ले लो, और फिर उस प्लेट को हम डाल देते हैं एक क्लोज्ड जार के अंदर। तो हमने क्या किया, क्रोम प्लेट को क्लोज्ड जार के अंदर डाल दिया। Now what happens, now this closed jar has got a mobile phase, और यू कैन डू दिस वे ऑल्सो, कि मैंने ना वो प्लेट लिया, उस प्लेट को मैंने ऐसे डाल दिया। ओके, ये हमारा सैंपल डॉट है और हमारा पूरा इधर सिलिका जेल है वो फैला हुआ है। ओके, सिलिका जेल को मैं ऐसे येलो से शो कर, तो सब जगह ये येलो येलो है, और ये हमारा जो कलर निकालना है वो मैंने डाल दिया। और अब उसके नीचे वी विल बी हैविंग अ मोबाइल फेस। ओके, सो व्हाट हैपेंस, जैसे जैसे मोबाइल फेस है वो ऊपर आता है, देन ये जो मिक्सचर है ना कंपोनेंट का, वो भी सेपरेट होता जाता है। ओके, और कंपोनेंट्स हैं, फिर वो क्या होते हैं, फिर वो ग्रेजुअली हमको, जैसे मोबाइल फेज है, जनरली हम क्या करते हैं, ये डॉट है ना इधर भी रख देते हैं, ये डॉट हमने बीच में रखा है तो हमको मोबाइल फेज ज्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही मोबाइल फेज टच करता है तुरंत ही इसके अंदर में जो अलग अलग सॉल्यूट हैं वो ना मुझे दो अलग कलर्स में दिखाई देंगे। तो सपोजिंग इसके अंदर में मैंने इधर डाल दिया ग्रीन कलर और दूसरा डाल दिया ब्लू कलर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूट के अंदर में दो डिफरेंट कलर्स मिले हुए हैं। ओके, सो अगर ये कलर दिखते नहीं है तो प्रोबेबली ये फ्लोरेसेंट भी हो सकते हैं। तो जो फ्लोरेसेंट है ना, ये फ्लोरेसेंट, इसको आप यूवी लाइट के अंदर में देखो, और यू कैन चेक इट इन आयोडीन क्रिस्टल चेम्बर ऑल्सो। एक चेम्बर है उसके अंदर में आयोडीन क्रिस्टल्स प्रेजेंट है। सो ये क्या करेंगे, आयोडीन के वेपर्स निकलते हैं, ये सब इस पे एड्सॉर्ब हो जाते हैं कंपोनेंट पे, और फिर आप उसका कलर देख सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट द क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी, क्रोम प्लेट। क्रोम प्लेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने ये जो ग्लास प्लेट ली है इसके ऊपर में कलर लगाया है, इसलिए इसका नाम रख दिया है क्रोम प्लेट। अच्छा, इसके अंदर में बेस्ट है अमाइनो एसिड्स। सो जो अमाइनो एसिड्स है ना, ये कैसे विजुअलाइज होती हैं, बाय स्प्रेइंग द प्लेट विद अ सॉल्यूशन ऑफ निनहाइड्रिन, and this is called as a spraying agent. ओके, निनहाइड्रिन है, इसको हम स्प्रेइंग एजेंट बोलते हैं। So even with this we can check the different colors. Got? नील, और फिर लास्ट है जिसको हम बोलते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है
तुमको ना यही वाली क्रोमेटोग्राफी लैब में कराएंगे, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ओके, so what exactly is partition chromatography? अब इसके अंदर में भी आप क्या करते हो, इसके अंदर में स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस, आपको ये दोनों फेस प्रेजेंट होंगे। कौन से? एक है स्टेशनरी और दूसरा है मोबाइल। सो वो इसके अंदर में दोनों लिक्विड होंगे। और सेपरेशन कैसे होता है? सेपरेशन होता है स्टेशनरी और मोबाइल फेस के बीच में पार्टीशन रख के। तो इसमें क्या होता है, एक स्पेशल क्वालिटी पेपर आता है जिसको हम बोलते हैं वॉटमैन पेपर। ये वॉटमैन पेपर है, जैसे टिश्यू पेपर होता है ना जो एब्जॉर्ब कर लेता है, वैसे ही ये होता है वॉटमैन पेपर। तो ये वॉटमैन पेपर आप क्या करते हो, इसके अंदर में ना वाटर है पूरा फंस जाता है। तो वाटर जो फंस जाता है वो काम करता है एज अ स्टेशनरी फेस। ट्रैप वाटर एक्ट्स एज अ स्टेशनरी स्पेस। और फिर इसके अंदर में ना हम क्या करते हैं, मिक्सचर डाल देते हैं सोल्यूशन का। जैसे ये स्ट्रिप है, इसके 2 सेंटीमीटर अबव हमने ना मिक्सचर डाल दिए सोल्यूशन के। ओके, 4 कलर्स डाल दिए। और उसके बाद 2 सेंटीमीटर के ऊपर में लाइन ड्रॉ करो बेस से, फिर यहाँ पे आप डाल दो। और उसके बाद इस पेपर को एक मोबाइल फेस में डाल दो। और आपको टच, मोबाइल फेस कहाँ तक टच करना है, मोबाइल फेस टच करना है सिर्फ ये पार्ट तक। ओके, इसके ऊपर नहीं, इतना ही, और इतना ही टच करना है कि ये जो कंपोनेंट है ये इस खाली हल्का सा सस्पेंड हो, इसको डिप नहीं करना है पूरा। ओके, सो मोबाइल फेज है, अब क्या होगा, धीरे 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 इट राइजेस अप, धीरे धीरे वो ऊपर उठेगा। बट इट, जब मोबाइल फेज धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो आप देखोगे कि लिक्विड्स हैं, वो अलग अलग कलर्स हैं, वो राइज हो रहे हैं। सो अलग, every solute is taken differently. सो ये एक हमको क्रोमेटोग्राम दे देता है। So with this chromatogram we can see the colored components। और कलरलेस कंपोनेंट अगर नहीं है तो हमको निन हाइड्रेन सोल्यूशन से देखना है। ओके, अब इसके अंदर में एक फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं रिटेंशन फैक्टर, आर एफ। What is retention factor? See, migration of the solute relative to the solvent, ये हमको बताता है कि रिलेटिव रिटेंशन सॉल्यूट का कितना है। तो इसको हम बोलेंगे आर एफ। तो आर एफ विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट फ्रॉम द बेस लाइन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों के बीच में क्या फर्क है वो हम इससे पता कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉलम क्रोमैटोग्राफी। गॉट इट? एक बार गो Yes, थ्रू कर लो। got it. एंड टुडे आई हैव फिनिश्ड योर चैप्टर।
Mm. Okay, Neil, then. Okay, teacher. Uh, Bye. Right, teacher.